Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the body of fungus. So let's move to the classboard. So dear students, body of fungus. So we are going to discuss this topic in points here. Points की शक्ल में इसको discuss करेंगे. The first point is mycelium. So it might be asked in the short question, what is mycelium? So dear students, the body of fungus. The body of fungus is called mycelium, which is made up of long thread-like structures called hyphae. Clear? So इसी mycelium से mycology हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में. mycologist, so that is from myc. Clear? और यानी कि कंप्लीट बॉडी जो होती है किसी भी फंगस की, उसको हम माइसीलियम कहते हैं. और वो बनती किससे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से. उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हाइफी. तो आइए अब हाइफी को इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं. व्हाट इज हाइफी? इट माइट बी आस्क्ड इन द शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल. So hyphae, it is a plural of hypha. Hypha is a singular. Clear? So hyphae, it is a plural of hypha. The body of fungus consists of long, slender. Long means lengthy, slender means thin, tubular. Tubular means कि ट्यूब की तरह के अंदर से स्पेस मौजूद है इनके अंदर. ठीक है, tubular. Branched, thread-like structures or thread-like filaments, that is more appropriate. Which are called hyphae. Clear? तो उन thread-like filaments को, उन structures को which are long and slender and tubular and branched, ये सारी इसी की properties हैं. They are called as hyphae. अब स्टूडेंट्स जो hyphae हैं वो दो तरह के हैं जो कि इनके अंदर मौजूद हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. इसके ऊपर लिख लें hyphae के आगे टाइप्स. Types of hyphae.
So there are two major types of hyphae. इसके लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर मेंशन कर लें. Septate hyphae and non-septate hyphae. So what is the difference between them? तो इनके मीनिंग, इनके नाम के अंदर इनका मीनिंग जो है वो छुपा हुआ है. सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट. सेप्टेट इज फ्रॉम सेप्टम. सेप्टम कहते हैं किसी भी चीज़ को तकसीम करने वाला कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी स्ट्रक्चर, उसको हम सेप्टेट कहते हैं. इनके अंदर ऐसे हाइफी जिसमें जिनके हाइफी के अंदर ये सेप्टा यानी कि क्रॉस वॉल्स मौजूद होती हैं उनको सेप्टेट कहते हैं, और जिसके अंदर ऐसे हाइफी जिनके अंदर ये क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं होती उनको हम नॉन सेप्टेट हाइफी कहते हैं. क्लियर? The hyphae that contain or that possess cross walls or septa are called septate hyphae. While the hyphae that lack cross walls or septa are called non-septate hyphae. या इन्हीं के लिए एक और टर्म है, हमने चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ी थी एलजी के अंदर, और क्वेनोसाइटिक हाइफी. ऐसी फिलामेंट्स को क्वेनोसाइटिक हाइफी भी कहते हैं. अब डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में पहले तो एक और पॉइंट इसमें डिस्कस कर लेते हैं. एक्चुअली जो सेप्टेट हाइफी, दे हैव पोर्स. इनके अंदर पोर्स होते हैं इन द क्रॉस वॉल्स. की क्रॉस वॉल्स हैं उनके अंदर पोर्स होते हैं थ्रू विच cytoplasm of cells are interconnected. क्लियर? और जहाँ तक बात है नॉन सेप्टेट हाइफी की, चूंकि इनके अंदर तो क्रॉस वॉल्स हैं ही नहीं, तो इनके अंदर वो पोर्स भी नहीं होंगे. सो दे लैक pores as they lack cross walls. Okay. अब डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग कि क्रॉस वॉल्स होने की वजह से जो सेप्टेट हाइफी हैं ये मल्टी सेलुलर दिखते हैं. ठीक है. Due to cross walls, hyphae are multicellular
Clear? Due to lack of cross walls, the hyphae is a single multinucleated filament और a single cell. Clear? ये एक single cell को represent करेगा. यहाँ पर ऊपर mention कर देता हूँ. So this is septate and that belongs to non-septate. Clear? So these are the differentiating points between them. Another differentiating point through which they can easily understand this is septate hyphae and this is a non-septate. इसमें क्रॉस वॉल्स नहीं है जैसा कि आपको नजर आ रहा है. It may have one or two nuclei. So these are the nuclei. While this is a single filament having many nuclei. Clear? So as you can see over there, this is a nucleus, single nucleus, and this is cross wall और सेप्टम और इसके दरमियान में मौजूद है ये पोर. दिस इज अ पोर जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म सेल का साइटोप्लाज्म और इससे अगले वाले सेल का साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होते हैं. सो दीज आर न्यूक्लियाई. क्लियर? एंड दिस इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टी पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल सिंगल फिलामेंट. आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 में न्यूक्लियस की जब हमने क्लासिफिकेशन की थी मोनो न्यूक्लिएटेड एंड बायोन्यूक्लिएटेड सेल्स के हवाले से. सो पॉलीन्यूक्लिएटेड में इसकी आपको एग्जांपल मैंने दी थी. ठीक है? सो इट इज पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल द नॉन सेप्टेट हाइफी. अब डियर स्टूडेंट्स जो सेप्टेट हाइफी हैं वो भी आगे दो तरह की हैं. इसकी दो टाइप्स हैं फर्दर. एक तो आपको ये नजर आ गया, दिस इज बेसिकली अ मोनोकैरियोटिक. दिस इज monokaryotic septate hyphae or septate hypha because it is a single, so it is appropriate. And now another one, and another chance is that is dikaryotic. It is a dikaryotic septate hyphae. ये monokaryotic, mono means single, karyo means nucleus, है septate लेकिन एक एक न्यूक्लियस है, एक हर सेल. ये एक सिंगल सेल 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 और ये मुकम्मल ही एक ही सेल है. ठीक है? इसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई मौजूद है. और यहाँ पर एक तो ये मोनोकैरियोटिक और उसके नीचे ये दैट इज डाई
karyotic, septate हाइफा। क्लियर? और इसमें देख सकते हैं दो दो न्यूक्लियाई मौजूद हैं, हर सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियस मौजूद हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जो सेप्टेट है वो फर्दर आगे दो तरह के, मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक। डाई मीन्स टू, तो आप इसको डाइकैरियोटिक हाइफी और मोनोकैरियोटिक में आपको डिफ्रेंसिएशन आनी चाहिए। अगर आपको सेप्टेट हाइफी पे इसमें डिफरेंस आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स उसमें शामिल करेंगे, ठीक है। बेशक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स, ये डेफिनेशन और पोर्स का डिफरेंस, क्रॉस वॉल्स का डिफरेंस, और उसके बाद ये कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं जबकि ये सिंगल एक ही सेल है, और इसके आगे फर्दर 2 टाइप्स, मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक। अब यहीं से न्यूक्लियस का पॉइंट एक निकालेंगे हम। going to talk about the nuclei of the fungi. न्यूक्लियस। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी फंगल हाइफे हैं ये मोस्ट ऑफ देम दे आर हैप्लॉइड, ठीक है। इसमें भी 2 कैटेगरीज हम बना लेते हैं। सो 2 कैटेगरीज आर most fungal hyphae and during fertilization or during sexual reproduction. So most जो fungal hyphae they are haploid, clear, and only there is a brief or a transient period, एक छोटा सा टाइम होता है जिसमें ये इनके जो हाइफी होते हैं वो उनके जो न्यूक्लियाई वो डिप्लॉयड हो जाते हैं, और वो कब है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हाइफी फॉर अ ट्रांसिएंट कहते हैं वक्ती तौर पर, फॉर अ ट्रांसिएंट पीरियड आर डिप्लॉयड due to zygote formation, due to zygote formation. क्लियर? तो ये तो इनके न्यूक्लियाई की सूरत हाल है, क्लियर। तो ज़्यादातर यानी कि जब नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेजेस पे होंगे, एक नॉर्मल स्टेजेस में, तो उस वक्त मोस्ट फंगल हाइफी आर हैप्लॉइड, वाइल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हाइफी होते हैं, चूँकि 2 डिफरेंट, आगे चलकर हम डिस्कस भी करेंगे, 2 डिफरेंट जो जेनेटिक मेकअप से, लेकिन कंपैटिबल जेनेटिक मेकअप के साथ एक दूसरे के साथ जब वो उनके हाइफी फ्यूज़ करते हैं, तो 2 डिफरेंट हाइफी जब फ्यूज़ करेंगे तो एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई आ जाएंगे, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड, तो उससे ज़ाइगोट जो बनेगा दैट इज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे चलकर हम देखेंगे ड्यूरिंग जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिहाफ के ऊपर इनके ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, ज़ाइगोमाइसीड्स एंड एस्कोमाइसीड्स एंड बेसिडियोमाइसीड्स, तो उनके अंदर फॉर अ लिटिल पीरियड, ठीक है, थोड़े से वक्त के लिए वो उनके हाइफे जो होते हैं वो डिप्लॉयड हो जाते हैं। और याद रखेंगे ये इसी दौरान जब ये डिप्लॉयड होते हैं तो आमतौर पर इसी दौरान इनकी वो फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं। आगे चलकर ये भी डिटेल से हमने डिस्कस करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनके अंदर दे हैव कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, दे आल्सो पोजेस द कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। Fourth point I am going to discuss over here, the body have reproductive structures. तो वो किस तरह से बनेंगे, यही हाइफी से ही बात चली थी, ठीक है। यहाँ से शुरू हुई हाइफी की, हमने टाइप्स को डिस्कस किया, फिर उनके सब टाइप्स को, उसके बाद इसी अंदर क्योंकि न्यूक्लियस की बेस के ऊपर इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं तो न्यूक्लियस को आगे डिस्कस कर लिया। अब इसी हाइफी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो हाइफी हैं ये द हाइफी are organized
into कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब कि थोड़ी सी जगह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये फिट हो जाते हैं ऐसे। अभी आगे चल के एग्जाम्पल भी बताता हूँ। इनटू कॉम्पैक्ट, हाईली कॉम्प्लेक्स, structures or highly complex reproductive structures called reproductive structures. For example, like the mushrooms, morels, and truffles, and puffballs, etc. तो ये इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ये बनते हैं जब ये हाइफी आप कॉम्पैक्टली ऐसे आपस में पैक हो जाते हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली पैक हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ये किस तरह से? लुक एट दिस। सो मशरूम तो आपने देखा ही है। आई एम गोइंग टू ड्रॉ ओवर हियर। So this is a mushroom. इसी तरह से morels. The morels they look like this. वो दिखते मशरूम्स की तरह के, लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। इस तरह थोड़ी सी elongated बॉडी और उनके अंदर इस तरह से हनी कॉम्ब की तरह के empty spaces and like this. So this is a morel. इस तरह से puff balls, ऐसे बॉल्स की शक्ल में ऊपर स्पोर्स बनते हैं ब्राउन कलर के ऑलमोस्ट, और ऐसे पफ लाइक स्ट्रक्चर, एक सॉफ्ट सा इस तरह से स्ट्रक्चर। दिस इज अ पफ बॉल। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से थोड़ी सी डिटेल देखिएगा कि होता क्या है। तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा इसका, इतना सा हिस्सा देखते हैं, इतने से हिस्से को, ठीक है। इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें तो इसमें क्या होगा। इस तरह से जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नजर आएगा। इसको मजीद थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं स्ट्रक्चर को। जब थोड़ा सा मजीद डिटेल से देखें तो इसमें हमें इस तरह से थोड़े से ट्यूबुलर टाइप स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ये एक्चुअली ये सारे के सारे जो थ्रेड लाइक आपको स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कॉम्पैक्टली एक आपस में जो है पैक हुए हुए हैं, ये सारे हाइफीज के मौजूद हैं, ठीक है। तो इतना से हिस्सा हमने देखा। सो दीज आर हाइफी, और ये भी सारे क्या हैं? दीज आर हाइफी। So this is how they are arranged. Dear students, let's talk about their cell walls. As we're discussing their body, तो cell wall की बात करें तो आपको पता है फंजाई की cell wall किससे बनती है dear students? The cell wall is made up of chitin, that is a polysaccharide, और ये it is decay resistant.
it is decay resistant, and it is more tolerable and more stronger than the lignin of the cellulose, lignin and cellulose of the plants. ठीक है, जो plants के अंदर cellulose और lignin होती है, wood, लकड़ देखिए ना कितनी hard है, ये उसको भी जो है वो decompose कर जाती हैं. Clear? तो उनकी cell wall जो है that is made up of chitin. ये भी आपने याद रखना है. और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इनमें एक एग्जांपल पुट की गई है कि इनके अंदर चूँकि इनका जो सा ये नेटवर्क है, ये इतना स्ट्रांग होता है अपने सबस्ट्रेट के ऊपर कि ये बहुत एक्टिवली ग्रो करते हैं, बहुत एक्टिवली ग्रो करते हैं. इवन कि ये उसको सम ऑफ दैम दे आर एबल टू ग्रो हाइफी ऑफ 1 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर लंबा हाइफी सिर्फ एक दिन में ग्रो कर सकते हैं. 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर्स एक दिन के अंदर, मतलब 24 आवर्स के अंदर ऐसे फंजाई भी मौजूद हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, एक और यहाँ पर येलो बॉक्स में एक एग्जांपल है, उसको मार्क कर लीजिए प्लीज. इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग एमसीक्यूज. दैट इज आर्मिलेरिया. ये बेसिकली पैथोजेनिक फंगस है और ये अफ्लिक्ट करती है कॉनिफर्स को. afflicting conifers, and its circular clone is up to 15 hectares. कितना है? 15 hectares. और 1 hectare is equal to 10,000 मीटर स्क्वायर. और इसी वजह से साइंटिस्ट का मानना है कि शायद ये सबसे बड़ा जो है ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि 1 हेक्टर जो वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है. और एक कितने इसका जो सर्कुलर क्लोन है, इस तरह से सर्कुलर फैशन में दरमियान से ऐसे इसका सर्कुलर क्लोन बनती है इस तरह से. तो सर्कुलर क्लोन जो है इसकी तकरीबन 15 हेक्टर के ऊपर फैल जाती है. ये इतनी तेज़ी से, मतलब इतनी तेज़ी से ये फैलती हैं, ये इतने एक्टिव होते हैं इनके हाइफी कि मैंने बताया एक दिन के अंदर 1 किलोमीटर तक, इन अ डे, ये याद रखिएगा, अ डे इन अ किलोमीटर. यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ दैट 1 किलोमीटर पर डे ग्रो. क्लियर? ये हाइफी की बात हो रही है. ये इनमें से कुछ ऐसे फंजाई भी मौजूद हैं. तो ये इसमें हमने बॉडी को डिस्कस कर रही है. हाइफी, टाइप्स ऑफ हाइफी, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के अतबार से, बहुत अहम. सबटेट एंड नॉन सबटेट या क्वाइनोसाइटिक हाइफी के इनमें डिफरेंस, और फिर सबटेट के आगे टाइप्स मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक, और फिर उनके न्यूक्लियाई नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेजेस के अंदर जो हैं ये मोस्टली दे आर हैप्लॉइड. हैप्लॉइड का आपको पहले मीनिंग बता चुका हूँ. ऐसे सेल जिनके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो अनपेयर्ड हों, उन्हें हैप्लॉइड कहा जाता है. और जिनके अंदर डिप्लॉइड हों, मतलब कि डिप्लॉइड का मतलब कि जिनमें पेयर्ड हों, उनको डिप्लॉइड कहा जाता है. तो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जब जायगोट फॉर्मेशन होती है, तो उस दौरान ये उस थोड़े से टाइम के लिए, वक्त के लिए ये डिप्लॉइड हो जाते हैं इनके न्यूक्लियाई. और फिर उसके बाद इनके 1 किलोमीटर पर डे MCQ मार्क करें. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इनके हैं बॉडी के अंदर मौजूद, जो कि इन्हीं हाइफी के ऐसे आपस में कॉम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बन जाते हैं. उन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को उनके एग्जांपल्स में मशरूम्स, मॉरल्स एंड पफ बॉल्स एंड ट्रफल्स, ये सारे आपसे डिस्कस किए. और इनमें बताया भी कि ये एक्चुअली मशरूम है. अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको ऐसे नेटवर्क मिलेगा थ्रेड्स का. ठीक है? और ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे फिलामेंट्स जो हैं, ये सारे सब के सब हाइफी कहलाते हैं. और टोटल बॉडी है ही इसकी हाइफी. वही कॉम्पैक्ट होके मॉरल बना रही है, वही कॉम्पैक्ट होके पफ बॉल्स बना रही है, वही कॉम्पैक्ट होके ट्रफल्स और वो इस तरह के जो है वो स्ट्रक्चर्स बना रही है. क्लियर? सेल वॉल इनकी काइटिन है, से मिलकर बनी हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, काफ़ी डिके रेजिस्टेंट है, लिग्नल से भी ज़्यादा टफ है. और आर्मिलेरिया जो कि पैथोजेनिक फंगस, इसके हवाले से भी आपने जहन में रखना है MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन फंजाई.
तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।